I used to hate actors. I just used to hate them कि ये कौन लोग हैं यार, ये आते हैं सेट पे, इन्हें शूट स्टार्ट करने से नारियल पानी पहले चाहिए होता है and इनके tantrums खत्म नहीं होता. I used to literally hate, and that was the popular opinion that I put across in the friends group that I was. ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे को एक बार पुलिस ने रोका और फिर मेरे को देखकर यार मेरे को जाने दिया. ये एक बार हुआ है. अभी भी ऐसा होता है कि लोग आपको गगन से ज्यादा आपको बग्गा के नाम से जानते हैं. आपके साथ ऐसा कभी होता है? 90% of the people who kind of follow me, or they don't know my real name. And as you said also in your newsroom also, people would not know my real name more often than not. And I kind of take that as a compliment because I think it's worked well then. There can be only two questions. One can be that when is Made in Heaven releasing, or the second one can be, is he actually gay? तो अब मैं गलत वाले का मैंने हाँ जवाब ना दे दिया, you know. Hi Gagan, hi Arjun, how are you both doing? Hi. Good. Hi. Good. Hi Tonakshi. Hi. So कहाँ पर हो अभी दोनों? अरे मैं दिल्ली में आया हुआ था. I was visiting my parents and I was there for a couple of days. Oh, nice. दिल्ली में हूँ, दिल्ली में. हाँ जी. And Arjun आप? मैं बॉम्बे में हूँ, घर पे. What I call home right now, which is actually a friend's home, while my house is getting renovated close by. Okay. So Gagan, I think हमें तो फिर दिल्ली में अगर आप हो तो हमें तो मिलकर ही बात करनी चाहिए थी, because I am also in Delhi currently and I didn't know that you are in Delhi too. But anyway, कोई बात नहीं, next time सही. But आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई है जिसका नाम है Don't Drink and Drive. जी. फिलहाल टॉपिक सही काफी क्लियर है कि क्या कहना चाह रहे हो आप, और ट्रेलर मैंने देखा, उसमें भी काफी कुछ समझ आया. लेकिन मैं फिर भी आप दोनों से एक बार जरूर जानना चाहती हूँ इसकी थोड़ी कहानी के बारे में, और क्योंकि मैसेज तो मुझे लग रहा है कि यही है क्लियरली कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, विच इज वेरी स्ट्रेट, वेरी क्लियर. बट क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो इसके बारे में? Gagan first. Yes. Arjun this time, please. Sorry, what's your question again? मैं कह रही थी कि टाइटल से तो बहुत क्लियर है कि क्या मैसेज देना चाह रही है ये फिल्म. करेक्ट. इट वुड बी ग्रेट अगर आप हमें इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताओ जो शायद हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, एंड वी शुड नो अबाउट. I mean, जो आपको ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है वो किसी वजह से नहीं दिखाया गया है, so I'll let that be. But the message is that only, yeah, it's pretty straightforward, but the way of delivering the message is not very straightforward. It's yeah, I've never seen this message delivered this way before, in a funny yet kind of mysterious and kind of spooky, little bit like just a eerie kind of, yeah. And I think there is some mystery to this film which is best if I don't spoil actually. बाकी तो जितनी क्लैरिटी टाइटल में दे सकते थे वो दे दी. टाइटल could have been anything. सही बात. But this is what it is. So, but this is all you're supposed to know. Okay. Gagan, you have something to add here? नहीं, बिल्कुल सही बताया उन्होंने. बिल्कुल एकदम perfect बताया. One thing that I can add is कि this is a story of one night. That correct. एक ही रात की कहानी है कि एक ही रात में what happens if you drink and drive. Okay. अच्छा, आप दोनों में से कभी भी सच बताना बिल्कुल, ठीक है? मतलब मानती हूँ इंटरव्यू है, बट फिर भी कभी कभी सच बोल लेते हैं. तो yes, मैंने करा है. जी. Yes, I have done it. But ask your question. I didn't even have to ask it. I've probably done it. But ask your question. नहीं, मैं तो फिलहाल ड्रिंक वाली बात पे जा ही नहीं रही थी. मैं तो जनरली पूछ रही थी किसी भी रीजन की वजह से ड्राइव करते टाइम पुलिस ने पकड़ा या नहीं, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या नहीं? You agreed to something that she was not even asking. She could have made the question anything. Anything now, yeah. Agreed. के आपने कभी anyway, let's not give ideas. Yes, of course that's happened. Of course it's happened. I mean, मैं बिल्कुल ये धूप में नहीं सफेद हुई दाढ़ी. सही बात है. पुलिस से पकड़े जाने के बाद सफेद हुई है. सही बात है. बट किस चीज के लिए पकड़ा गया था? Can you share that as well? I mean, sure. I mean, seat belt,
मास्क, ये बस ये रीसेंट बता रहा हूँ अभी, तो यही बेसिक थिंग, ऐसी कोई ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं, चोरी डकैती नहीं। आई थिंक मास्क वाला तो सभी के साथ हुआ है रिसेंट या टाइम, तो या मुझे लगता है वो तो एक सबके पास है। अच्छा, या गगन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? कब पकड़ा पुलिस ने? पकड़ा तो होगा। कब पकड़ा है पुलिस में यार, आप ऐसे मत बोलो, मतलब आई नो, क्या ये है ना? क्या है यार, आई मीन, ओके, ट्रैफिक We are पुलिस not the ने Vadali brothers. I gotta say, I have to say, all the interviews of this are treading very dangerous territory, है ना Gagan? dangerous territory. Yeah, All it of can be them are like, cut out and used anyhow. yeah. All of them are like, क्या तुम drink and drive करते हो? You know, and 10 and 20 years later, they'll be coming back to haunt us. कि तुमने एक God, इंटरव्यू में ये बोला था। आप Anyway, ऐसा चला कुछ रहे नहीं थे, है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी बिग क्राइम, जो वो वाले लाइक खून करने वाले क्राइम्स वाली चीज नहीं है, बट दिस इज आजकल समथिंग जो आजकल आज हमारे I'm साथ sorry, हुआ है। आजकल हाँ, कुछ पता नहीं। Anyway, yeah. बट मुझे लगता है कि किसी ना किसी रीजन से हमें ऐसा हुआ है कि हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो पुलिस ने जरूर रोका तो है ही। सो इस तरह का इंसिडेंट तो जरूर हुआ है। गगन वो तो आपके साथ ऐसे ही कब हुआ? उनको वो तो उनका मन करता है, तो they don't need a reason। ऐसे ही या रोककर मुझे ऐसे भी पूछा है, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, बस Yes, 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 yes. बस जा रहा हूँ यार, that's all, you know। Maybe they didn't have anyone to chat with, और थोड़ा सा मन कर गया, Correct. थोड़ा किसी से बात करने का, तो रोक के पूछ Or लिया। maybe he was a fan. Maybe he was a fan and he just wanted to talk to you. ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे को एक बार पुलिस ने रोका, और हाँ। फिर मेरे को देखकर यार मेरे को जाने दिया। ये एक अरे बार हुआ है, ये एक बार हुआ है। अरे I was like, sorry. Actually, no, he didn't recognize my face, I'll be honest. But my partner was with me, and the second she told him, and we were actually driving back from a shoot, और मैं गलती से गलत रास्ते में घुस गया, वन वे में घुस गया गलती से, और वहाँ at the end of the one way मुझे पकड़ लिया, और फिर कुछ भी करके ये करें वो करें क्या करें, and then as soon as she said कि सॉरी भाई साहब, हम शूट से पूरे दिन शूट करके बहुत थक के वापस जा रहे हैं, ये एक्टर हैं, and he was like अच्छा, and then he like 2 minutes chat and then he let me go। अच्छा, ऐसा पूछा नहीं कि अच्छा किस में आए थे, क्योंकि ऐसा ऐसे आई थिंक ये नहीं बहुत of कॉमन course क्वेश्चन होता है। नहीं पूछा था, पर ये प्री मेड इन हेवन वाले दिन थे। हाँ, ओके। अच्छा, आज नहीं, जो one of दोनों my very famous friends have told me that this can go two ways. Yeah, for sure. Yeah. If आज they की डेट में recognize you, आज की this डेट can में it go will two ways. go today it will go in the The bad other way. direction only, I think. Yeah. Those days Yeah. were simpler, you know. Correct. Yeah. that's understandable, true. Must have So, been like 2013 or something। oh man, Yeah। okay। अच्छा, जो दो अभी एक्टर्स मेरे साथ बैठे हैं, जो आज मुझसे बात कर रहे हैं, वो दोनों ऐसे हैं जो जिन्होंने शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर बन के करी थी, और जो गगन का तो फिलहाल मुझे स्टार्टिंग से पता है, स्त्री को आपने असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह उसमें आपने काम किया था, और वरुण सॉरी अर्जुन, आपने भी बंटी और बबली एंड रंग दे बसंती में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, if I'm not wrong। Yeah। I didn't know that। I actually did not know that about Gagan। That's great to hear। Oh, wow, I didn't know that। Yeah, so that's Yeah. the common ground आप दोनों का जो जर्नी शुरू हुई है वहां से हुई है। सो एक जगह आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनके आपने शुरुआत करी अपने करियर की, फिल्मी करियर की आई वुड से, और अभी एक्टर हो, तो क्या इट वाज ऑलवेज क्लियर कि एक्टर बनना है, या पहले था कि डायरेक्शन में ही काम करना है? गगन, विल स्टार्ट विद यू। Yeah। I go। actually I wanted to become a director. I started with theater and I started writing and directing plays. तो मेरे को बहुत मजा आया, एंड उससे पहले मैं एक्टिंग करता था इन थिएटर, एंड आई थॉट कि यार मुझे ना इसमें ज्यादा किक आ रही है, एंड देन आई स्टडीड डायरेक्शन फॉर एन ईयर। I came to Mumbai, started filmmaking, and I used to hate actors. I just used to hate them कि ये कौन लोग हैं यार, ये आते हैं सेट पे, इन्हें शूट स्टार्ट करने से नारियल पानी पहले चाहिए होता है, एंड इनके टैंट्रम्स खत्म नहीं होता। I used to literally hate, and that was the popular opinion that I put across in the friends group that I was. And I really wanted to become a director, but after a couple of years and night पूरा रात भर काम करने के बाद I realized कि assisting was a very managerial job, and I was under the impression that it would be as creative as I thought it would be. And then I thought I would take the route of writing a film
on my own and directing it, और मैं कोशिश करूंगा कि वो किसी film festival में जाए और कुछ हो जाए, and from there I can become a director. But before that could happen, I got an acting project and पिछले 5 साल से फिर मैं acting कर रहा हूँ, और अब मेरे सारे दोस्त जिनके सामने बैठ के मैं एक्टर्स को कोसता था, वो मुझे सारी बातें याद दिलाते हैं कि तूने ये बोला है और अब तू वही है. So I think your debut project was college romance only. जी. Okay. I क्योंकि वो started नहीं acting होता तो college बग्गा romance. कहाँ से मिलता. हाँ जी. Okay. अर्जुन, आपके भी माइंड में ऐसा था कि एक्टर बनना है या असिस्टेंट डायरेक्टर में आप वो थे उस टाइम पर कुछ? नहीं, मुझे एक्चुअली शुरू से एक्टर बनना था, बचपन से ही. एंड असिस्टिंग फॉर मी, मैंने स्कूल खत्म करके इट वाज क्लियर टू मी कि मुझे करना ये है, और मैंने सोचा कि मुझे कॉलेज जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है. आई Very नो व्हाट आई वांट टू डू. आई थिंक आई वांट टू जस्ट मूव टू बॉम्बे एंड वहां जाकर आई गेन सम एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, एंड आई लर्न व्हाट आई हैव टू, बिकॉज आई हैड नेवर स्पेंट टाइम ऑन अ फिल्म सेट. मुझे didn't know head or tail of filmmaking or anything like that. Yeah. So, but I had done my acting courses. I had done whatever I could find around. This Kishore Namit Kapoor in Warsaw and Mr. Barry John in Delhi. So all this I had done. And then I moved to Bombay and I just started working as an AD. And पर मेरा यही था, honestly, even while I was working as an assistant director, learning all about the process and everything, but बहुत क्लियर था मुझे that I'm here primarily मुझे observe करना है, you know. I really got to be around some magnificent actors in my AD years. 2 projects with Mr. Amir Khan, Mr. Amitabh Bachchan, and the like, and it was really a fantastic learning. Also spent time around actors from whom I learned what not to do. You know, so overall it was just amazing education and experience, and then करते करते एक फिल्म, मेरा प्लान सिर्फ था मैं 1-2 फिल्म करना चाहता था, and but then you get greedy, you know. अच्छा ये प्रोजेक्ट है, चलो अब ये करते हैं. And then finally Rang De Basanti was my last one, which I was not, but then this project came and I read this script and I was like, my God, ये तो करना ही है. So that became my last film as an AD, and then by which time I was like 25 or something, you know. So I was like, भैया ट्रेन निकल रही है जल्दी से, you know. And the AD life is also like quite an unhealthy life. Okay, you live on chai and cigarettes, and so I had to take a year off. I had to kind of work on myself, join a gym, and ye wo. Then I also, in that year off, I went to Lee Strasberg and did a course there. So I just tried to train myself as much as possible without going to college. That's all. But have you ever been on a set where you're working with people that you've assisted? Because now that happens with me. And they pull my leg like how? No, not directly. Actually, I did an ad with Shad. That was many years ago. But yeah, I mean, invariably, every project I land up on has somebody who knows me from my AD days. Even if it's Nitin Rao, Steadicam operator, who comes for 2 days, you know. So, but I really enjoy. But most of all, it's the lightmen, actually. You know, Mansoor Bhai and Maqsood and all these. Like, they've all seen me, and the Boom Dadas. They've seen me like as a piddu, man. Like, you know, they've taught me how to and they remember. They remember. And we remember, you know. Like, at least we will. It's pretty amazing. I believe ऐसा होता ही होगा, of course, because industry is not that big, of course. Of course not. And absolutely. कितने सारे projects चल रहे होते हैं, तो they keep on shifting. So कहीं ना कहीं वो लोग मिल जाते हैं. चाहे नाम से ना याद रहे, but I think face से तो याद रह जाते कि हाँ आप भी थे ना. Often ऐसा होता है project पर मिलकर, बस ऐसे ही होता है कि first everything is done, and after a whole day of hanging out with someone, then you're like, यार हमने इससे पहले कौन सा किया था? You know, it's like, it's like sometimes it doesn't even matter. But Okay. अच्छा गगन, आप तो ना मेरे को लगता है कि गगन से ज्यादा सबके लिए बग्गा हो, जो अभी मैं अपने कॉलीग्स को बताया, मैंने कहा अरे वो बग्गा, कहते हैं अच्छा बग्गा का इंटरव्यू ले रही है तुम,
मैंने कहा हाँ, तो बग्गा मुझे लगता है कि सबको याद रहता है। अभी भी ऐसा होता है कि लोग आपको गगन से ज्यादा आपको बग्गा के नाम से जानते हैं, आपके साथ ऐसा कभी होता है? Absolutely. मतलब एक second, just to give context to Arjun. Arjun, I did a show called College Romance in which I did a Right. character named Bagga, Right. Yeah. which Yeah. got really famous. I know the show is really famous, and I know हाँ. that you were in it. I'm sorry. अरे, Yeah. नहीं, it's fine. It's Yeah, definitely fine. Yeah. So, it happens. I think 90% of the people who kind of follow me or they don't know my real name. And as you said also in your newsroom also, people would not know my real name more often than not. And I kind of take that as a compliment because I think it's worked well then. Yeah. Okay. Yeah. अच्छा, गाड़ियों से मुझे लगता है आपको कुछ अलग ही सीन चल रहा है गगन, किसका? कहीं ना कहीं गाड़ियों से कुछ अलग ही सीन चल रहा है। गाड़ियों से अच्छा। कभी कॉलेज रोमांस में गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हो, गुस्से में आके अब यहाँ पर फिर से गाड़ी से रिलेटेड फिल्म लेकर आ गए हो, तो ये क्या है, ये क्यों ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की तरफ क्यों भाग रहे हो? I think the car मेरा गाड़ी लेने का टाइम आ गया है. I think मेरे को universe is giving me those signs. But jokes apart, I think बहुत interesting. It's a very interesting way of putting out the word कि don't drink and drive. Yeah. So obviously you'll have to have a car in that. And so I don't know how to answer this question. I'm really sorry. May I add? May I Please. add? Please do. That this happens to be the third time that I have been pulled out of a car with another man on camera. In fact, that was the first thing I said to Jay possibly कि यार ये मैंने ना 2 बार पहले करा हुआ है कि मैं और एक आदमी गाड़ी में है और पुलिस बाहर निकालती है. It happened in a film called I Am, which was directed by Onir, and then it happened in Made in Heaven also. And now for the third time here. Right. So for me, actually, to be watching that scene feels like I mean, that's what, this is very different from the other two. Yeah. You know, the other two were in fact quite similar to each other. Correct. But this is very different, which is why it's okay. But still, it's weird seeing it for the third time, like on screen, like, अच्छा फिर से ही हो रहा है, okay. I think the pattern बन रहा है. Yeah. नहीं, because at the end of the day, some things will remain common in across stories, across genres. Correct. I think. Yeah. अच्छा अर्जुन, क्योंकि मेरी आपसे बात हो रही है, मुझे कमेंट्स में गालियां पड़ सकती है अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, सो मुझे बचाने के लिए I'll tell you. Arjun, I would say let her complete this one. हाँ. Complete your question, please, ma'am. I'm not asking. No, now Gagan has said a good thing. There can be only 2 questions. One can be that when is Made in Heaven releasing? Or the second one can be, is he actually gay? तो अब मैं गलत वाले का मैंने हाँ जवाब ना दे दिया हूँ, you know. But Okay. Yeah. I'll go with the first one then. First question. When is Made in Heaven 2 releasing? Yeah, well, I finished my work. I finished shooting it. We finished shooting in earlier this year. And ahead of that, Baki is all, I don't know, you need to ask the creators and Amazon and, you know, यहीं पर है, call पर है Amazon की team, just साइड में पूछ लो. अभी करते हैं. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोनों का दिल्ली से रिश्ता रहा और मैं दिल्ली वाली हूँ, और मेरे हिसाब से मेरा आज तक का कोई ऐसा चैट नहीं रहा, कोई इंटरव्यू नहीं रहा जहाँ पर मैंने दिल्ली को लेकर लोगों से बात नहीं करी है. दिल में बसता. दिल्ली कितना खास है दोनों के लिए? बहुत पसंद आती है वो, मेरा रोल बहुत पसंद आता है. I mean, very much so. तुझे सलाम में मेरा कैरेक्टर बहुत I mean, पसंद it's आता my है. growing up life, कई बार earliest ऐसा होता है कि memories, the प्यार किया best तो part of my डरना life. किया का जो I love My entire extended family, सारे cousins, नाना नानी, सब कुछ. ये काम करने के लिए फैमिली School, थी. 2 out of 3 मेरे schools बड़े that भाई I've been एक to in स्कूल my में थे, life. छोटा भाई First डायरेक्टर था. girlfriend. I was there. सभी कुछ दिल्ली It was को like a very great you know. atmosphere. वो फिल्म भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, गाने बहुत अच्छे थे, स्टोरी अच्छी थी, कैरेक्टर अच्छे थे. both grew up, so kind वो of, चली भी बहुत थी. माँ तुझे सलाम also में यहाँ मेरे पर ना बहुत सारे firsts हुए. physically hard Your होता है. first school day, It was very first challenging. kiss, your first So girlfriend. that was very tough. Yeah. because So I had it an automatically action becomes director very directing special. for the first time. Yeah. So you can Yeah. imagine In उसके fact, right दिमाग now, में क्या क्या होता it's था. really वो तो sad, मतलब but मुझसे ऐसी चीजें but कराई it's also true that लाइफ में कभी जिंदगी में नहीं करूँ. it's just really sad that the situation is such a tragedy.
It's all like, I mean, हाय राज, it takes कैसे me हो a आप? few days, and each time मैं ठीक हूँ, even आप if I'm कैसे in हैं? Delhi for a few मैं days, बहुत I बढ़िया हूँ come और back मैं to आपसे Bombay बात करने with के लिए बहुत a ज्यादा bit of एक्साइटेड हूँ, नॉट it बिकॉज always आई एम takes अ a few फैन, days for it to बट ऑल्सो बिकॉज exit the आपका एक शो system. आ रहा है जिसका नाम है You know, तना, my और उसका father, टीजर और my ट्रेलर मैंने देखा basically जिस niece who lived there. It's just really sad. Honestly, it's like Yeah. it's reaching a situation where it hurts to see my loved ones breathing that air day in and day out. You know, it's just I really, हुए दोनों और बहुत yeah. पसंद Otherwise, आया क्योंकि वो आपको yeah, कहीं ना it's कहीं true. हिला देता है, Delhi आपको has वो had my इंट्रीग heart करता है all कि my ये शो life, तो देखना ही है but भाई, तो वो would, वाली चीज doesn't है। have my बट lungs. तनाव That's आपकी all. कैसे हो ये जानना मेरे लिए, Yeah, मतलब मैं बहुत ज्यादा yeah, क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। yeah. अच्छा, सो इज इट राइट टू हाँ, तो से कि दिल्ली एक तनाव इमोशन है आप एक दोनों के लिए कहीं ना कहीं? इजरायली शो का Absolutely. अडेप्टेशन है, दिल्ली का I think खाना। so. फौदा करके वो शो है, अरे Yeah, और yeah, वो yeah. ये बात तो applause है. films में There's no उसके rights comparison. लिए I'm हुए थे। putting There's this no to rest और comparison. right मेरी here. थोड़ी सी That Bombay, I love स्टोरी you. ये है I कि call myself a लॉकडाउन Bombay के वाला now. दौरान मैं काफी But शोज देख रहा था, सब देख रहे on थे, food, कुछ और we don't करने have को shit था on नहीं, तो Delhi. we were watching Yeah, shows वन Delhi आफ्टर is the just yeah. तो recommendations भी ओके, आते थे बिकॉज लोगों खाने के, की भाई बात तूने ये है, ये सो शो लेट देखा मी है, ये जस्ट नहीं ये पुट देखा ऑन है, वन मोर थिंग तो आई एंड आप वाज दोनों को कीपिंग द बताती शो हूँ कि मे बी यार आराम मैं से दिल्ली देखा में हूँ मैंने, फूड एंड आई टूर्स वाज लाइक करती हूँ पुशिंग इट, आई सेलेब्स डिडंट के वांट टू साथ, लाइक, बट और वन डे जब भी ऐसे चलो दिल्ली यार में इतनी सेलेब्स तारीफ आते हो हैं रही तो है उनके लोगों, साथ काफी एक लोगों फूड ने टूर देखा होता था है उनकी एक्चुअली, किसी भी पसंद तो मैंने बोला मैं जगह, देख लेता पसंदीदा हूँ जगह इसको, पर, जैसे कि कोई और नॉर्थ मैंने कैंपस जब चूज देखना करता है, शुरू कोई किया साउथ तो कैंपस चूज आई करता है, कुडंट हेल्प या बट कोई कहता वॉच है द मजनू का एंटायर डीलर 3 जाके सीजंस इन खाने वन पीने। गो, एंड तो आई वहां डोंट पर जनरली जाते वॉच हुए मोर बहुत देन सारी चैट्स 3 होती है, episodes of प्रोफाइलिंग होती है, max 4 बहुत सारी episodes जर्नी के in बारे a में day, बातें होती है। क्योंकि I सो get आई जस्ट exhausted, वांट टू नो दिस I फ्रॉम don't बोथ ऑफ want यू, to क्या ऐसा like होता है तो क्या because आप I दोनों don't want to इंटरेस्टेड हो binge गए उसका watch it पार्ट and see बनने के लिए? everything in one go. Very rarely do I Sure. like I like Sure, to savor absolutely. it and तो watch खाते it and पीते then गप्पे take my मारेंगे। breaks. हाँ, Full on. You ठीक है, had me done. on खाते पीते. Yeah, चलो yeah. ठीक है, डन And देन। enjoy, फिर think ठीक है, about ऐसा it, करते and हैं then go बिकॉज back to अभी the तो next गगन आई episodes थिंक of it. किसी So if कमिटमेंट की it वजह से ही दिल्ली में it takes होंगे, me about बट नेक्स्ट टाइम if I व्हेनेवर यू बोथ see आर इन दिल्ली it takes जस्ट me लेट about मी 2 नो, days to 3 days to एंड see आई a होप आपके series, पीआर्स अभी सुन रहे हो, one सो season जस्ट लेट maybe, मी नो right? व्हेनेवर यू बोथ आर तो इन मैंने दिल्ली एक हफ्ते एंड 10 वी विल दिन डू अ के फूड अंदर टूर ये विद यू पूरे फॉर श्योर, 3 बहुत सीजंस फन। देख लिए इसके, For Done. sure. because I couldn't Thank help you. it was so बाकी exciting. about And I thought about कि maybe one डोंट should ड्रिंक एंड make ड्राइव, sure वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट समथिंग जो हमने नहीं सुना या सुनते नहीं आए लोगों से, बट जैसे कि आपने बताया कि इसको दिखाने का तरीका काफी अलग है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सबको ये देखनी चाहिए, एंड आई होप लोग देखें एंड कुछ सीख कर ही जाए उससे। Yeah, absolutely. Thank you. Thank you for Correct. that. Thank you so much, Arjun. Thank you so much, Gagan, for your time today, and it was lovely chatting with you both.